Today our lecture is lecture number 14, quantitative inheritance. Basically there are the two kinds of characters in human beings. One character is qualitative, one character is quantitative. So uh, anyone have know about the qualitative and quantitative characters? Screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. So basically qualitative characters are the characters which are divided into two discrete classes. Two discrete classes. It means any type of character which are divided into two discrete classes. Like if we said that the flower color is the red or the white. Flower color is the black or the pink. But there is no continuous character like red color is the flower color is red which is 2.2, 2.3, 2.4. So any character which is either present or either absent is known as qualitative character, like the presence of ions in wheat, absence of ions in the wheat, and the stem color. But when we talk about the quantitative inheritance, this is the include of the quantitative characters or the measure of the quantitative characters. Quantitative characters are the continuous character, the character whose inheritance is continuous, like in case of plants or the humans, the plant height or the human height, which is a continuous character. Like the yield, plant yield, it is also a continuous character. There are no discrete classes. There is no a definite classes. Like if a human may be 5 feet, 5.2 feet, 5.3 feet, up to and as much the genes are active. In case of plant yield, there is also this is continuous character. A yield may be 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg. There is no limit. There is no definite classes. Either the plant is 3 kg or either the plant is 6 kg. So the quantitative inheritance is the continuous inheritance, while the qualitative inheritance is based on a discrete classes. We already discussed the laws, Mendel's laws, which are related to the inheritance of qualitative characters which are not the continuous characters. So far, quantitative inheritance is not like the qualitative inheritance, or the Mendel laws are based only on qualitative inheritance. The characters are the discrete class characters. Like the flower position, either the flower is present on the terminal part or either on the lateral branches. Flower color, seed shape, either the round, either the wrinkled. These are called the discontinuous or the qualitative characters. While there are some other characters whose expression is continuous, i.e., they cannot be individuals divided into the distinct classes. There is no break in their expression. They are continuously expressed. The study of these characters which involve the measurements are called continuous characters. So quantitative characters are also known as metric characters. While the inheritance of the characters is the inheritance of these quantitative characters is not so simple. Why this is not simple? Because it is controlled by several genes which are equal in their effects. These are not controlled by the one or the two genes. These are controlled by the many genes, and these genes show equal in effects.
So there are several genes which control their effect. So these qualitative characters are also known as the multiple factor or the multigenic inheritance. And one most important thing is these quantitative characters or quantitative inheritance is affected by environment. Affected by environment. How affected? Like when we talk about the height, a human height, when a human is enclosed in a box, and we provide the food to that human, but there is no enough space for the increase of human height, then no height will be increased, because in a closed box there is not any more space for the increase of height. This is the environmental effect. When we talk about the skin color, and in case of human, the skin color, when we give an environment, like in our winter season and the summer season. In winter season, humans are sit in the sunlight or the sun. In case of sunlight, the color will be black. But in case of summer, the humans made their environment very cool, like some kind of machines or the instruments like ACs. Their color will be white. So this quantitative inheritance is based only on environment. Highly affected by environment, basically not actually based on environment, but this is highly affected by environment. But quantitative traits are not affected by environment. Let's solve some kind of examples for the understanding of these quantitative inheritance. Like in case of qualitative inheritance, the calculation of the F1 and F2 or the genotypic phenotypic ratios are very easy for us. But what we will do, what we will do, what we will do in the case of quantitative inheritance, how to calculate this, how to calculate their genotype, how to calculate their phenotype, because these are the many genes, like the group of genes, 5 pairs, 6 pairs, 4 pairs, 3 pairs. So the genotypes or the phenotypes is very difficult for us. So we develop some kind of formulas. Like in this example, in wheat plant, height is controlled by several major and minor genes. Height is controlled by many genes which are equal in their effect. Let's suppose, हम suppose करते हैं in wheat there are the 5 gene pairs control the inheritance of plant height. 5 gene pair control कर रहे हैं plant height की inheritance को. हमने क्रॉस किया एक टाल वैरायटी जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और एक ड्राफ वैरायटी जिसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर. अब हाइट को कितने कंट्रोल कर रहे हैं जीन पे 5, 1, 2, 3, 4 और 5. So we said that 60 centimeter height is controlled by all dominant gene and 40 centimeter height is controlled by all recessive genes. When we make the cross between these two 60 centimeter and 40 centimeter tall plants, the one plant give the gamete, make a gamete A, B, C, D, E, and other make a gamete small a, B, C, D, E. F1R, capital A, capital B, small b, capital C, small c, capital D, small d, capital E, small e.
But here is a problem. How to calculate their phenotype? What is the phenotype of this plant? Either this is the half of this one, because half genes are capital, or either the half of this one. But how to calculate? We will add the both plants, both parents genotype or phenotypes, like parent A is phenotype 60, parent B phenotype is 40. We add the both parental phenotypes 60 plus 40 and divide it by 2, which is equal to the phenotype of F1, which is 50 centimeter. But here our problem is how to calculate F2 genotypic frequency, F2 phenotypic frequency. Let me explain this slide later. First of all, we have look on how to calculate these. There, there is two most important formulas. The first thing is we have to calculate each allele carry how much contribution. Like how much contribution is done by each allele in case of this question. Like there are the 10 alleles. There are the total number of alleles are 10 because the 5 gene pairs, so total alleles are 10. First of all, we done the highest height or the plant with more height, then minus from the plant with less height. Then we divide this by the total number of alleles. Like the dominant plant have the height 60 centimeter, then 60 minus by 40, then divided by 10. 60 minus 40 20 आया, 20 को 10 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया. It's mean each allele contribute 2 centimeter to height. Each allele contribute 2 centimeter to height. Each allele contribute कर रही है 2 centimeter height. So अब हमने ईच एलील कंट्रीब्यूशन निकाल. ईच एलील कंट्रीब्यूशन कैसे निकालनी है? जो आपका हाईएस्ट हाइट वाला प्लांट है उसको माइनस करेंगे लोवेस्ट वाले से और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एलील्स पे. जबकि नेक्स्ट फार्मूला इज नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कैसे निकालनी है. नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील से और रिस्पेक्टिव क्लास पे डिवाइड कर देना है. ये क्वेश्चन ये मैं आपको फार्मूला पिछली स्लाइड में क्लियर करता हूँ जहाँ पे हमने F2 को कैलकुलेट करना है. Here you observe that there is first one column is frequency, second column is genotype and third column is phenotype. So if we take our parent, there is we all know in case of F2 two parents are similar to our parents. One plant is as such produced like the parent 1 and one plant is similar to parent 2. So when we talk about the first plant, it's always similar to parent 1. So we said that 1 frequency mean how many number of plants. So
one plant is present which has the all genotypes, all alleles are dominant. All 10 alleles are dominant, like capital A, capital A, capital B, capital B, capital C, small, capital D, capital D, capital E, capital E. All alleles are dominant. And the phenotype of that dominant plant is 60 centimeter. Then we have to that multiply this frequency 1 with number of dominant genotypes, which is 10. 10 multiplied by 1. Here, in this case, 1, which is frequency, multiply with the dominant alleles, which is 10, divided by 1. Why divided by 1? Because this is number 1. So 10 become 10 divided by 10 divided by 1 is equal to 10. So second one is the frequency of alleles is 10. 10 plants are 9 dominant alleles and 1 recessive alleles. When we moving from up to down, we have increased the dominant alleles or decrease the dominant allele and increase the recessive allele. डोमिनेंट एलीज को कम करते जाना है, रिसेसिव एलीज को ज्यादा करते जाना है ऊपर से नीचे. So as we previously calculate that each genotype contribute the each allele contribute 2 centimeter to plant height. So there the plant height is 58 centimeter. We subtract the 2 from the 60, which is equal to 58, because we know each dominant allele contribute 2 centimeters. So here one dominant allele is reduced, so that we neglect or that we subtract that allele contribution. Then for third one, 10 multiplied with 9, 10 9 90 divided by 2 is equal to 45. 10 divided by 9 45. So we again reduce the one more allele. So 8 dominant allele with 2 recessive allele. Subtract that allele contribution, 56 centimeter. Then 45 multiply with 8 divided by 3. So we calculate these frequencies as follows. This is the case of F2. How to calculate the genotype or the phenotype or the frequency of plants in F2. Then there is another one example, and example is assume that the difference in height of two rice varieties measuring the 18 inches and 34 inches tall. दो राइस varieties हैं, एक 34 इंचेस और एक 18. अब हाइट किस वजह से कंट्रोल हो रही है? 4 जीन्स के ग्रुप है, 4 pairs of genes के. Make a cross between 18 inches tall and 24 inches tall plant. What will be the phenotype of the F1 and F2 plants? So गिवन क्या है? दो प्लांट्स गिवन है हमें, एक 18 इंचेस है और दूसरा 34 इंचेस है. जीन पेयर्स कितने हैं? 4 हैं. जहां पे जीन पेयर्स मेंशन ना हो कि कौन कौन से, वहां आप लेट कर लेते हैं कि वो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल डी हो सकता है.
लेकिन यहाँ पे 4 तो मेंशन है ना, सो हमने 4 ही लिए। ए बी बी सी सी डी डी क्रॉस कराया, स्मॉल ए बी से, स्मॉल ए वाले की हाइट 18 इंचेस है और कैपिटल वाले की 34 इंचेस है, यहाँ पे मेंशन है ये चीज़ें। अब गैमीट्स बने इधर से ए बी सी डी और इधर से ए बी सी डी, उनका क्रॉस क्या आ गया, दिस वन। हाउ टू कैलकुलेट द फिनोटाइप, एड 34 विद 18 एंड डिवाइडेड बाय 2। 34 प्लस 82 को 18 को ऐड किया 52 आया, 52 को 2 पे डिवाइड किया 26 इंचेस F1 आ गया। नाउ अब हमने क्या करना है, F2 प्लांट्स का करना है और दूसरा हमने करना है कि ईच एलील के ईच जीन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये हमने ईच एलील की कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया है। एज मैंने आपको बताया कि डोमिनेंट पेरेंट की फिनोटाइप को माइनस करना है रिसेसिव पेरेंट की फिनोटाइप से और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ एलील्स पे। डोमिनेंट पेरेंट की फिनोटाइप है 34 और रिसेसिव पेरेंट की फिनोटाइप है 18। सो 34 को अगर 18 में से माइनस करें तो आएगा 16 और 16 को 8 पे डिवाइड करें तो आएगा 2। इट्स मीन ईच एलील कंट्रीब्यूट कर रही है 2 इंचेस को। फर्स्ट एग्जांपल वही है कि एक प्लांट हमेशा ही ऐसा होता है जो सारे के सारे डोमिनेंट एलील्स रखता है और उसकी हाइट होगी 34। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 1 पे तो आ जाएगा 8 प्लांट ऐसे होंगे, 8 प्लांट ऐसे होंगे जिसमें 7 डोमिनेंट एलील्स होंगे और एक रिसेसिव एलील होगा। सो एक एलील रिसेसिव आ गया तो 34 में से 2 को माइनस कर देंगे 32 आ जाएगा। इसी तरह 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56, 56 को 2 पे डिवाइड करेंगे 28। 28 प्लांट ऐसे पैदा होंगे जो 6 डोमिनेंट एलील रखते होंगे और 2 रिसेसिव एलील रखते होंगे और उनकी फिनोटाइप होगी 30। आपके 56 प्लांट ऐसे पैदा होंगे जिनमें 5 डोमिनेंट एलील, 70 प्लांट ऐसे होंगे जिनमें 4 इक्वल इक्वल होंगे, यानी 4 ही डोमिनेंट होंगे, 4 ही रिसेसिव एलील्स होंगे। 56 ऐसे होंगे जिनमें 3 डोमिनेंट होंगे, 5 रिसेसिव होंगे और उनकी फिनोटाइप होगी 24। जबकि 28 ऐसे होंगे जिसमें 2 डोमिनेंट होंगे और 6 रिसेसिव होंगे, उसकी फिनोटाइप होगी 22। 8 प्लांट ऐसे होंगे जिनमें 1 डोमिनेंट और 7 रिसेसिव होंगे, उसकी फिनोटाइप होगी 20। एक प्लांट ऐसा होगा जिसमें 8 के 8 ही रिसेसिव होंगे और उसकी फिनोटाइप होगी 18। देखिए अब रिसेसिव पेरेंट क्या था, सारे रिसेसिव थे उसमें एलील्स और उसकी फिनोटाइप क्या थी, 18 थी। Then there is another example. In this example, the 3 gene pairs with equal effects are supposed to control the fruit weights. 3 जीन पेयर्स हैं जो इक्वल इफेक्ट कर रहे हैं और वो फ्रूट वेट को कंट्रोल कर रहे हैं स्क्वैश प्लांट में। फ्रूट इन वन वैरायटी, फ्रूट एक वैरायटी में आया जो वेट कर रहा है 5 पाउंड को, 5 पाउंड, और दूसरे में 2 पाउंड है। F1, F2 generation are raised from the cross between 2 varieties. What will be the effect of each contributing gene? The fruit weight of F1 and F2 plants, the number of genotype, phenotype in F2, the proportion of plant carrying the 4 and 3 pound weight. So, अगर हम गिवन की बात करें तो वो कह रहा है 3 जीन पेयर कंट्रोल कर रहे हैं, ए बी बी सी सी, इनको क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल से। डोमिनेंट वाले की वेट है 5 पाउंड और रिसेसिव की है 2 पाउंड। यहाँ तक हमारे पास गिवन है।
पहला क्या कह रहा है वो, सबसे पहले द इफेक्ट ऑफ ईच कंट्रीब्यूटिंग जीन, ईच जीन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना होता है, नॉमिनेट में से रिसेसिव को माइनस करना होता है, नंबर ऑफ अलील्स पे डिवाइड करना होता है। अब आपने ये देखना है वो क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ ईच कंट्रीब्यूटिंग जीन। देखिए यहाँ मैंने इफेक्ट निकाला हुआ है ईच अलील का, 5 पाउंड माइनस 2 पाउंड 3/6.5। लेकिन जब वो बात करता है ईच कंट्रीब्यूटिंग जीन की, तो एक जीन्स के 3 अलील्स हैं, तो आपने इसको सिंपली नंबर ऑफ जीन्स पे डिवाइड कर देना है rather than नंबर ऑफ अलील्स। लाइक 5 minus 2 divided by 3 genes per annum, so divided by 3, which is equal to 1 pound. Then we talk about the fruit weight of F1 and F2. First one, F1, 5 plus 2 divided by 2. So F1 phenotype is 3.5 pound. While in F2, in case of F2, we know that one plant is always with the 6 dominant genes, whose the phenotype is 5 pound. 6 multiplied with 1 divided by 1 is equal to 6. 6 multiplied with 5 divided by 2 is equal to 15. 15 multiplied with 4 is equal to 60. 60 divided by 3 is equal to 20. 20 multiplied with 3, 60. 60 divided by 4 is equal to 15. 15 multiplied with 2 divided by 30 divided by 5 is to 6. 6 multiplied with 1 divided by 6 is equal to 1. Similar in case of their phenotype, we reduce the 0.5 pound due to the contribution of each allele is 0.5 pound. Then the third portion is the number of genotype and phenotype, also we seen in the KRAS F2. The proportion of plants carrying 4 pound and 3 pound. It means the 4 pound and 3 pounds are how many plants. So here we observe the 4 pound plants are 15 and 3 pound plants are also 15. Before moving to this example, you have take 10-minute breaks. See you after 10 minutes. We will solve this numericals further, almost 2 to 3 numericals only. In this break, you have revised your previous one lecture. If you have any question, then please ask. See you after 10 minutes. Try to focus on this example. Like, assume that the two maize varieties having yellow and white kernels were crossed. अब ये कह रहा है हमने सपोज किया दो मेज की वैरायटीज हैं, एक में कर्नल येलो है और एक में वाइट है, उनको क्रॉस करवाया गया। इन F2 प्रोजेनी में क्या हुआ, एक 64 में से एक प्लांट ऐसा था जिसके पास येलो कर्नल थे। देन वो क्या कह रहा है कि एक प्लांट ऐसा था जिसका वाइट कर्नल था, लेकिन
62 प्लांट ऐसे थे जो मिडवे थे दोनों पेरेंट्स में। What are the genotypes of the plants and also calculate the number of genes involved। यहाँ पे उसने हमें कुछ भी नहीं डिस्क्राइब किया, जस्ट आपको ये बता दिया है कि 64 प्लांट है हमारे पास F2 में आए हैं, एक उनमें से येलो कर्नल का है, एक उनमें से व्हाइट कर्नल का है, 62 प्लांट इंटरमीडिएट है। अब आपने उनके जीनोटाइप्स भी कैलकुलेट करने हैं, आपने नंबर ऑफ जीन्स जो इन्वॉल्व्ड है उनके एक्सप्रेशन में वो भी कैलकुलेट करने हैं। सो अब देखें, फर्स्ट थिंग इज हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व्ड। जब तक हमें नंबर ऑफ जीन्स की इन्वॉल्वमेंट का नहीं पता होगा, हम F2 में मौजूद प्रोजनी की जीनोटाइप्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। How to calculate the number of genes? When there is the one pair of genes, the gametes are only two types. So total individuals are 4. Try to focus on this wording. अगर हमारे पास एक जीन पेयर हो, देखें एक जीन पेयर हो तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी होगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब आएगा तो दो गैमीट उससे बनेंगे, दो दूसरे पेरेंट के होंगे, तो इंडिविजुअल हमारे पास कितने आ जाएंगे? 4। लेकिन जब हम डाई हाइब्रिड की बात करते हैं जिसमें दो जीन पेयर इन्वॉल्व होते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है, अगर दो जीन पेयर हों तो 4 एक तरफ बनते हैं गैमीट्स, 4 दूसरी तरफ बनते हैं, तो टोटल इंडिविजुअल कितने बन जाते हैं? 16। ये सारी चीजें आपने लिखनी नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहाँ पे मेंशन की गई है। आप यहाँ पे अपना आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जब when there are the 3 pairs of genes। अब देखें जब 3 पेयर ऑफ जीन्स होंगे, 3 हेटेरोजाइगस ग्रुप हो गए, 3 हेटेरोजाइगस ग्रुप है, 2 की पावर 3 किया, 8 टाइप्स की गैमीट्स आ गए। 8 टाइप्स की गैमीट्स एक तरफ है, 8 टाइप की गैमीट्स दूसरी तरफ है। जब उन्होंने आपस में क्रॉस करवाना है तो इंडिविजुअल्स कितने आने हैं? 64। 8 8 64। सो हमारे इंडिविजुअल्स कितने हैं? 64 हैं। सो हम कह सकते हैं कि देयर आर द 3 पेयर ऑफ जीन्स आर इन्वॉल्व्ड। सेकेंडली वो क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की जीनोटाइप्स कैसी हैं? अब हम प्लांट्स की जीनोटाइप्स की बात करते हैं। F2 ऑस्प्रिंग्स की जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स। फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप, phenotype. There is no need to describe the phenotype, but for your understanding I am only written here. There is no need in exam, during exam, to write the phenotype, because in question he can't ask about the phenotype, he said only the genotype. So we said that one frequency, एक इंडिविजुअल 64 में से ऐसा है जिसके पास सारे डोमिनेंट हैं, जो येलो कलर का है। 6 ज़रब 1 डिवाइडेड बाय 1 बराबर है 6, 6 ज़रब 5। इसी तरह रिस्पेक्टिवली एक एक डोमिनेंट जीनोटाइप कम होता जाएगा, रिसेसिव इंक्रीज करता जाएगा। अगर हम इन टोटल्स ऐड करें तो हमारे पास अब ये जीनोटाइप्स भी आ गई हैं और फ्रीक्वेंसी भी आ गई है कि 6 प्लांट्स ऐसे होंगे जिनकी जीनोटाइप में 5 डोमिनेंट एलील होंगे, एक रिसेसिव होगा। 15 ऐसे होंगे जिनमें 4 डोमिनेंट 2 रिसेसिव। 20 ऐसे जिनमें 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव। अगेन 15 ऐसे जिसमें 2 डोमिनेंट 4 रिसेसिव। 6 ऐसे जिसमें 1 डोमिनेंट 5 रिसेसिव। एक ऐसा जिसमें 6 के 6 रिसेसिव। अगर हम इनको टोटल करें, 6 और 1 7, 15 और 7 22, 22 और 20 42, 42 और 15 57, 57 और 6 63, 63 और 1 64। जी हमारे 64 के 64 इंडिविजुअल्स पूरे हो जाते हैं जो उसने क्वेश्चन में बताए हुए हैं। अब 64 में से एक को ले ले तो उसमें सारे डोमिनेट हैं जो येलो है, दूसरे एक को ले तो वो सारे रिसेसिव हैं जो कि व्हाइट कर्नल रखते हैं, और अदर 62 जो है वो इंटरमीडिएट है। देयर इज नो नीड टू राइट द phenotype. While when he asks about the phenotype, then you have to mention the phenotype.
Then there are the two questions which is tried by yourself. Like first one is assume that the skin color of human is controlled by the two gene pairs. Genotypes of Negro written as AABB and the white is small b. What will be the skin color of children from the marriage between the Negro and white and between two F1 of this meeting? अब इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें भी आपने फिनोटाइप्स नहीं बतानी, जस्ट क्या बतानी है, जीन्स पेयर उसने दे दिए हैं, नाइग्रो के जीन पेयर है कैपिटल ए कैपिटल बी यानी ब्लैक है, और वाइट का स्मॉल बी है, तो आपने स्किन कलर बताना है F1 का। हाँ, इसमें आपको बताना पड़ेंगे कलर्स। अब वो इंटरमीडिएट क्लासेस आपने खुद से डिस्क्राइब कर लेनी है कि लाइक फर्स्ट वन ब्लैक है जिसमें सारे डोमिनेट हैं, अगर उसमें से एक रिसेसिव हो जाता है तो आप लाइट ब्लैक कह लें, देन अगर दो रिसेसिव हो जाते हैं तो आप डार्क वाइट कह लें, देन अगर एक रिसेसिव हो जाता है तो क्रीमिश कह लें, और देन अगर कोई भी रिसेसिव और डोमिनेट नहीं रहता तो आप उसको वाइट कह लें। इसी में आपने F1 F2 कैलकुलेट करनी है। Then second week, I suppose per plant seed yield of certain wheat variety 3 gram and another one is 9 gram. This is most similar to our cash fruit fly in which the fruit weight is 6 pound and the 3 pounds. Suppose that the difference in grain yield between two plants is due to 3 gene pairs and acting cumulatively. What will be the grain yield of F1 and F2 plant? That's all for today's lecture. If you have any question, then please ask. Miss Nimra Sujawal and Uzair Hassan, you can't add your sequence number before your name. Is there any problem? Then share. Try to solve this problem. But please add your sequence number before your name. I don't think so. That's a very time-taking task. सर वो मैंने किया था तो दोबारा जब रिकनेक्टिंग की तो वो ये आ गया था, मैंने किया था पिछली क्लास में।